Hi friends, can you tell me what is the speed of your bike? Yes, of course. Tell me what is the speed of jet aeroplane? And it is 2000 km per hour. Tell me what is the velocity of athlete? Athlete की velocity कितनी होती है? Tell me what is the velocity of a ball of a faster bowler? बताइए क्या हुआ इसमें स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिस्टेंस होता है। इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू हैव कंप्लीटली इन डिटेल ऑल जो भी मोशंस के लिए कंसेप्ट्स है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, लाइक एज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। सो फर्स्ट वन, व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस। सो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? सो डिस्टेंस सिंपल, डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं वो डिस्टेंस होता है। सो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। बॉडी जो पाथ कवर्ड कर लेती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। सो हियर इज अ यू, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ यू टू गो टू योर फ्रेंड्स होम। आपके फ्रेंड्स के होम को जाना है। सो वट एवर द पाथ यू आर फॉलोड दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस। Is it right? It may be 1 kilometer, 2 kilometer or 500 meter also. So this is the distance and unit of distance is simple. Meter is a SI unit. SI unit of distance is a meter. Other units of distance also there, like as meter, centimeter, kilometer, mile, feet. So these are the units of distance. So I hope you are getting my point. This is a distance. Distance is the actual path covered by a body. Let me share another term in the motion and that is displacement. So displacement क्या है? Let's say example, यहाँ पर आपको आपके घर जाना है मान के चलिए, और आप जो पाथ फॉलो करते हैं वो ऐसा फॉलो करते हैं ABC अगर जाते हो तो ये लॉन्ग डिस्टेंस है। लेकिन लॉन्ग क्यों जा रहे हैं? आपका बीच में फ्रेंड है इसलिए आप जा रहे हो, ऐसा मान के चलते हैं। बीच में आपका फ्रेंड है इसलिए आप क्या कर रहे हो? घूम घूम के जा रहे हो, राइट। सो ABC ये पाथ आप फॉलो कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? वो डिस्टेंस कवर कर रहे हो, राइट ना। आपके लिए दूसरा भी एक पाथ है, वो है डायरेक्टली A to C। डायरेक्टली आप आपके होम जा सकते थे, विदाउट फ्रेंड को मिले बगैर भी जा सकते थे। सो ये जो डिस्टेंस आ रहा है AC, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट अगर हम स्टेट करना चाहें, सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, हमारा जो हम जहाँ से निकले थे वो इनिशियल पॉइंट है और जहाँ हमें पहुँचना है वो फाइनल पॉइंट है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज द पाथ कवर्ड इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। बट द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। सिंपल, वेरी सिंपल। सो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज वन टाइप ऑफ डिस्टेंस, इज इट? सो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का यूनिट सेम रहेगा, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेस एंड डिस्टेंस? सो वन डिफरेंस इज इट इज इन द लेंथ और पाथ कवर्ड। जो भी पाथ कवर्ड जो भी होता है वो डिस्टेंस है। So displacement has a particular direction and distance has not a definite or particular direction. So distance is a scalar quantity. So what is meant by scalar quantity and what is meant by vector quantity? Let me define scalar quantity or just scalars. हम सिर्फ इसको scalars भी बोल सकते हैं। So scalars are the physical quantity, those physical quantity which are having only magnitude but not having डायरेक्शन। जिनको डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलार्स क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलार्स ओनली बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, वेक्टर्स किसको बोलते हैं? वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिनको डायरेक्शन भी होता है, जिनको मैग्नीट्यूड भी होता है। डिस्टेंस इज स्केलार क्वांटिटी व्हाइल द डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल। नेक्स्ट जो डिफरेंस है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में से वो है डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। हम कभी भी नहीं बोल सकते कि मैं पर्टिकुलर -5 किलोमीटर चल के गया हूँ, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा हम मान ही नहीं सकते, राइट ना। बट डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो,
ये डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्यों होता है ऐसा? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का ही देखना है। मान के चलिए हम एक गाड़ी से निकल रहे हैं, कहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट से घूम घूम के फिर से वहीं पर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? हमें यही देखना है ना, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट जो डिस्टेंस आता है, इनिशियल पॉइंट ही हमारा फाइनल पॉइंट रहेगा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? जीरो, राइट ना। सो लेट्स मूव ऑन स्पीड। स्पीड क्या है? देख पा रहे हैं आप यहाँ पर ट्रेन कितनी फास्ट भाग रही, राइट ना, कितनी फास्ट भाग रही। सो ये क्या है? आप क्या बोलोगे इसको? स्पीड बोलोगे, वेलोसिटी बोलोगे? लेट मी क्लियर। स्पीड एंड वेलोसिटी में डिस्टिंग्विश क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी में डिस्टिंग्विश क्या है? जैसे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा, सिमिलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस पर बेस्ड होता है स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड होता है वेलोसिटी। Understand? Let define what is meant by speed. Speed is the distance covered by a object, any object per unit time or in a given time. एक दिए गए टाइम के अनुसार एक बॉडी जितना डिस्टेंस कवर्ड करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। So we can state this formula: speed equals to distance covered by time required, and the unit for this speed is, unit of distance is meter and unit of time is second. Yes, unit for time is second. So speed का जो यूनिट रहेगा, SI यूनिट रहेगा, वो मीटर पर सेकेंड रहेगा। ओके, सो स्पीड किस में मेजर किया जाता है? मीटर पर सेकेंड इन SI सिस्टम। अंडरस्टूड? सो स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन time. Simple. So let's define what is meant by velocity. Velocity क्या है? The distance covered in a particular direction in a given time, or simply we can state in another way, the displacement per time. Oh, simple है। So velocity क्या है? Displacement upon time. Displacement upon time. This is a formula for velocity, and the unit of वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? क्या है? ओनली है मीटर, एंड टाइम का क्या है? सेकेंड। सो यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? सो स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम व्हाइल वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. Right? You know that distance is a scalar quantity, therefore speed is also scalar quantity. While velocity आपने जान लिया है, यहाँ पर displacement क्या है? One of the vector quantity, therefore velocity is also vector quantity. So I hope you have cleared this. So velocity का यूनिट, स्पीड का यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, एवरीथिंग, 4 क्वांटिटी हमने देखे। दिस 4 फिजिकल क्वांटिटीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न मोशन, राइट ना। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और वो है एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन, व्हाट इज मेंट बाय एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। The rate of change of velocity with respect to time means जो velocity में change होता है। rate मतलब जो भी rate रहता है change होने का, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? acceleration, but in a given time. So acceleration equals to change in the velocity upon time, but we can denote this in the formula also. A is for acceleration, and V is for final velocity, and U for initial velocity, and T is time. This can be written as delta T or just T2 minus T1. T2 minus T1. So final time and initial time. Now the acceleration is divided into 3. So first one is positive acceleration, negative acceleration, and zero acceleration. So what is meant by positive acceleration? Where the velocity of a body or the object is increases with respect to time. With respect to time is known as positive acceleration. Positive acceleration हम कब बोलते हैं? जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज होता रहता है। देख सकते हैं आप कैसा इंक्रीज हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज मीन बाय नेगेटिव एक्सेलरेशन? व्हेनेवर द वेलोसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर बॉडी और ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. Okay, so this is called as negative acceleration.
जब किसी वस्तु का, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज होता है, ऐसा जब हम ब्रेक दबाते हैं, राइट ना, जब हम ब्रेक दबाते हैं, ब्रेक प्रेस करते हैं, तब क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता जा रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है, राइट। Have to remember one more thing, negative acceleration is also called as deceleration। क्या बोलते हैं, deceleration। So deceleration is also known as negative acceleration। Very simple, straightforward। Next one, zero acceleration। What is meant by zero acceleration? Whenever a velocity of a body or object is remains constant, there is no change in the velocity of body or the object is known as जीरो एक्सेलरेशन। सो एज लाइक दिस, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी ही नहीं है। सो दिस इज जीरो एक्सेलरेशन। सो द स्टेडी बॉडी हैज जीरो एक्सेलरेशन। एस्केपिंग रॉकेट और द एरोप्लेन हैज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दिस इज अ फैन, सो दिस फैन हैज zero acceleration because neither velocity is increases or decreases, right? And whenever press the brake, the velocity is decreasing, therefore we can say this is negative acceleration or just deceleration। So I hope friends, the all 5 physical quantities that you have learned, distance, displacement, speed, velocity and acceleration। So friends, वीडियो अच्छा लगे जल्दी से लाइक दबा लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, चैनल पर नए हो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, साइंस के साथ जुड़ सकते हैं एंड साइंस का ईच सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं हमसे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।